वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, बेसल कम्युनिटी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी जो है CIB के एग्ज़ाम में। तो काइंडली आप इस टॉपिक को जरूर देखें। अभी क्या है कि बहुत सारे बैंक्स जो है दिवालिया ना हो, इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि अपना बेसल अकॉर्ड को फॉलो करें। बेसल अकॉर्ड बेसिकली क्या है कि कुछ बैंक्स का सुपरविजन है, तो वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा जो है हमारे प्रोविजंस करके पहले ही रखें हम, ताकि बैंक दिवालिया होने से बच पाए। ठीक है, ये एक बार क्या हुआ कि टाइम गैप की वजह से, जैसे देखिए अमेरिका का टाइम कुछ और है, वहाँ पे दिन है तो यहाँ रात होती है, ऐसा टाइम का डिफरेंस है। उस वजह से क्या हुआ था, एक बार बहुत ज़्यादा एक बैंक ही दिवालिया हो गया था उस चक्कर में। तो इसलिए कहा गया है कि बेसल अकॉर्ड अगर हम फॉलो करेंगे तो उससे फिर हम दिवालिया होने से बच सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी प्रोविजनिंग करी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एस्टैब्लिश्ड इन। चार ऑप्शन है, इसमें से आपको इस तरह का ही एग्जाम आएगा। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं पुराने पेपर से उठाए गए हैं, तो कम से कम 100 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एस्टैब्लिश्ड इन 1974। बेसल कमेटी वर्क्स अंडर, किसके अंडर वर्क करती है ये? BIS। फ्रेंड्स यही सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो कृपया ध्यान देके क्वेश्चंस अपना मगअप कर लीजिए। और इसका PDF अगर चाहिए तो इस YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स की चिंता ना करें आप। जी, वैसे भी हमने बहुत सारे नोट्स शेयर कर चुके हैं अभी तक। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू, और जो नहीं जुड़े हैं तो काइंडली इस व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए और आपको PDF नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है सर। अब देखते हैं BIS हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट बैसल। इसका नाम इसीलिए बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, तो बैसल में ही इसका हेडक्वार्टर है। बैसल नॉर्म्स आर, क्या है ये? वॉलंटरी गाइडलाइंस है। बैसल नॉर्म्स अप्लाई टू, किसको अप्लाई होते हैं? फॉरेन बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। बैसल 1 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1988। थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं, तो बस आपने सिर्फ सुनना है, इसी से ही आपका तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बैसल 1 फोकस्ड ऑन credit risk. Minimum CRAR under Basel 1 is 8%. Basel 1 did not cover market risk. Basel risk market risk amendment to Basel 1 came in the year 1996. Basel 2 और pillars के रिगार्डिंग हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए Basel 2 came into force in 2004। देखिए वीडियो सुनते सुनते अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपका जजमेंट हो जाएगा। Basel 2 is based on कितने पिलर्स होंगे? 3। पिलर 1 डील्स विद minimum capital requirements. Credit risk covered under Pillar 1 are credit, market and operational. Pillar 2 focuses on supervisory review process. Stress testing is part of Pillar 2. Pillar 3 is concerned with market discipline. Operational risk was introduced in the Basel 2. Which risk is not covered under Basel 2? That is reputation risk. Credit risk refers to loss due to borrower default. Operational risk arises from process, people and systems. Market risk arises due to exchange rate movements. ICAAP is a part of Basel Pillar 2. CREP is conducted by, CREP कौन कंडक्ट कराता है? That is RBI. देखो जो सेंट्रल बैंक होगा वो कोशिश यही करेगा कि किसी तरह लिक्विडिटी रिस्क वगैरह ना आए। डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉल्स अंडर Pillar 3. ICAAP is part of Pillar 2. CSREP is conducted by RBI. Disclosure norms falls under Pillar 3. Basel 2 capital adequacy ratio remained 8%, which is not a pillar in Basel 2, that is liquidity management. तीन pillars हैं, ये याद कर लेना इनके नाम: capital requirement, supervisory review and market discipline. RWA risk weighted asset under Basel 2 depends on asset risk. Which risk is qualitative in nature, that is reputational risk? Which approach is used for credit risk, that is standardized and IRB? Which approach is simplest? Standardized. AMA risk
relates to operational risk. Risk weights are assigned based on credit rating. Which agency provides credit rating? That is CRISIL. CRISIL की full form आ सकती है तो वो आप याद कर लें. Which is not an ECAI, that is set B. Basel 3 के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे. Basel 3 was introduced in the year 2010. Basel 3 focuses on capital quality and liquidity. Highest quality capital is CET1. Minimum CET1 ratio, that is 4.5%. Minimum Tier 1 ratio 6%. Total capital ratio under Basel 3, that is 10.5%. कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कई बार ये CCB करके भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, कैपिटल कंजर्वेशन बफर बोलते हैं इसको. तो ये कितना है? 2.5%. पर्पस ऑफ CCB इज टू एब्जॉर्ब लॉसेस. काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर range is 0 to 2.5%. Counter-cyclical buffer is applied during economic boom. Which buffer restricts dividend payout? That is CCB. AT1 capital includes perpetual bonds. Tier 2 capital includes subordinated debt. Which capital absorbs losses is first? That is CET1. Leverage ratio is non-risk based. Minimum leverage ratio 3%. Purpose of leverage ratio: control excessive borrowing, which is not part of capital, that is deposits. CRAR formula. Capital CRAR का formula क्या है? Capital to risk weighted asset. Risk weighted asset increases when risk increases. Basel 3 applies to all banks. RBI grants Basel norms through guidelines. Basel 3 strengthens governance, risk management, capital, and liquidity. Which risk is not directly covered in Basel 3? That is reputational risk. Basel norms aim to ensure stability. Liquidity और LCR के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे. LCR ensures liquidity for 30 days. Minimum LCR requirement 100%. LCR formula includes HQLA. HQLA stands for high quality liquid assets. NSFR ensures long term funding stability. ये इनके फुल फॉर्म भी कई बार आ जाते हैं, तो ये भी याद रखें. NSFR ensures long term funding stability. NSFR minimum level 100%. NSFR horizon is 1 year. Which ratio controls asset liability mismatch? That is NSFR. Which ratio is short term focused? That is LCR. Liquidity risk means inability to meet obligations. Which risk arises due to interest rate change? That is market risk. Basel norms were revised mainly after global financial crisis. Which risk is not measurable? Reputational. Which is not a liquidity ratio? That is CRAR. Which Basel Accord introduced liquidity ratio? Basel 3. Which risk arises due to fraud? That is operational risk. Which risk is reduced by diversification? That is credit risk. Which risk is reduced by hedging? That is market risk. Basel norms improve bank safety. Which ratio limits balance sheet expansion? That is leverage ratio. Basel committee reports to BIS. Basel 1 ईयर 1988 बेसल 2 आया था, 2004 में बेसल 3 आया था, 2010 में. पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रेशियो, पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू, पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन. CET1 मेनली इक्विटी से रिलेटेड है. रिस्क वेटेड एसेट डिपेंड्स ऑन रिस्क. ICAAP प्रिपेयर्ड बाय बैंक. SREP कंडक्टेड बाय रेगुलेटर. लिक्विडिटी रिस्क कवर्ड इन बेसल 3. CRAR मिनिमम 8%. CCB value 2.5%, CCYB maximum 2.5%, LCR horizon 30 days, NSFR horizon 1 year, leverage ratio non-risk based, capital adequacy ensures solvency, Basel norms objective is financial stability. Friends, 100 क्वेश्चन हमने आज पढ़े किसके
बैसल अकॉर्ड के। और काइंडली इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब इतना कोऑपरेट करते हैं और हमारी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग अकॉर्डिंग टू बैसल अकॉर्ड।